Hi guys, welcome back to another video, and in this video we'll be talking about fibrinolysis. Okay, so first of all I would like to tell you that if you have not seen the previous videos, just go and have a look at them first, because fibrinolysis is basically in relevance with the previous videos that we have studied. So please go watch the platelet plug formation and how is that clot formation happening, which factors are responsible for that. So that is why this will be making sense to you, I think. So please go back to those videos and first please go through them, and then you can come back to this one, because in the previous video we have studied the entire circulatory system, and in that video we have already talked about how is the circulatory system, what are the parts of the circulatory system, and what is the major role of RBCs, WBCs, and how is whenever there is a rupturing in the wall of the the blood vessels, what is happening, and what are the agents which are coming for the rescue, and this all we've studied in the previous chapters, and now we'll be studying about fibrinolysis. So previous videos we have studied about the intrinsic and the extrinsic factors which are leading to the formation of platelet plug formation. So clotting mechanisms we have studied in the previous videos. As you can see that I have put in the clotting mechanism 1, clotting mechanism 2. So you can have a look at that, because in that only platelet factor 3 and all these platelet derived growth factors, these are responsible for clotting. So you can go and see that first, so that this can make sense to you. Now let's start for the fibrinolysis. So as you can see, I've written the fibrinolysis. The other name of fibrinolysis is clot removal. Clot removal means, for example, if there is something, for example, there is a wound, right? And in that wound, what is happening? Due to the rupturing of the blood vessel, what is happening? There is a formation of the blood starts popping out. Okay, blood starts coming out. In order to stop that blood from coming out, what happens? The clot mechanism is taking place, right? So you can go through those previous videos, and in those videos you can easily figure out what is happening in that clot mechanism. And now, what happens when the clot is being formed and when the clot is being completely done, when the wall is being resynthesized, the process is done. Now what happens to the clot? Who will tell that the clot has to stop forming now? So this is now where we come to clot removal. That means now the clot has been done, now the resynthesis of the wall has been done. So who will let them know that what is fibrinolysis कैसे हो रहा है, कौन करवाएगा fibrinolysis, ये हम पढ़ेंगे. Okay. So fibrinolysis is also called as clot removal. As you can see, it is written here. The other names are degradation, or you can say dissolution. That dissolution means khatam ho jana, dissolve ho jana, and destroying of fiber. Three types, three names you can say: fibrinolysis, clot removal, degradation, dissolution, and destroying of fibrin. So these are the various names which are given to it. We can call it by any name, but the major scientific name that people nowadays are using is fibrinolysis. So in fibrinolysis, what is happening? As the blood clots, these are formed at that point of time whenever there is a leakage of blood from your body. So as soon as the leakage stops, what happens is these blood clots, they are very, very temporary. Obviously, when the wound will be healed, these clots have to be removed. So now which process is that, and how is that happening, which we will be studying here. So as I've written already, blood clots are temporary. That means they're not permanent. They have to be removed after some point of time. So, and when ruptured wall is repaired, these clots needs to be removed. That means till the time there is injury, there is wound, there is no healing going on. At that point of time, this needs to be done. This needs to be go on in flow. So now what is happening? I am saying as a ruptured wall, जहाँ पे भी wound था, जहाँ पे भी चोट लगी थी, जहाँ से भी खून निकला था, that area has been recovered. अगर वो recover हो गया है, repair हो गया है, तो मतलब कि अब हमें इस clot को remove करने का time आ गया है, right? So this is also that is why we are saying these clots are temporary, and when the ruptured wall is repaired, it needs to be removed. Now अब यहाँ पे कौन आता है रेस्क्यू पे? प्लेटलेट फैक्टर 3 एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो दोनों के दोनों प्लेटलेट्स में से बाहर निकलते हैं, ठीक है. और उनसे क्या होता है, हमारा ये प्रोसेस शुरू होता है क्लॉट डिसोल्यूशन का या फिर क्लॉट रिमूवल का, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे क्या हो रहा है, एज यू कैन सी दिस ब्लड क्लॉट दिस साइड, दिस ब्लड क्लॉट. जैसे ही यहाँ पे ब्लड क्लॉट हम आते हैं, ब्लड क्लॉट एक्टिवेट, जैसे ही ब्लड क्लॉट हमारा बन जाता है प्रॉपर, उसमें क्या होता है, वो एक्टिवेट करता है किसको, सराउंडिंग एंडोथेलियल सेल्स. जैसे हमने and guys, again I'm saying that if you need to understand this video, please go and watch the previous videos in the platelet formation. I specifically told
you what are these endothelial cells and what are they doing, what is their role in the platelet blood formation. So that is very very important, guys, to go and watch it first, and then you can come back to this one. So please do watch it because this is the relevance of this is the relevant to that topic. Please go and watch it first. Right after surrounding endothelial cells, अब क्या हो रहा है, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्लॉट जैसे ही बनना शुरू करता है, जैसे ही वो बनता है उसकी वजह से ये एक्टिवेट करता है इसको सराउंडिंग के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, दैट बिकम्स एक्टिव, ठीक है। और वो क्या करता है, जो इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में, प्लाज्मा प्रोटीन में हमारा जो प्लाज्मिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है, एक्ट्स अपॉन प्लाज्मिनोजन व्हिच इज इनएक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट मेक्स इट एक्टिव। सो प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्टिव होता है। तो जैसे ही प्लाज्मिन एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट को अपना क्लॉट डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। जो भी ब्लड क्लॉट होता है उसके बाद वहाँ पे डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स दे गेट टू नो दैट यस हीलिंग इज हैपनिंग एंड द प्रोसेस नीड्स टू बी स्टॉप्ड, right? So now we have just given a flowchart here, पूरा summary है, the red portion is the summary of the entire topic, why and how is fibrinolysis happening. तो जैसे ही प्लाज्मा का जो अमाउंट है that decreases, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्लॉट रिमूवल जो होता है वो अकर होता है at a very slow level. For example, अगर हमारा एक wound जो है that's been healed, right? But what is happening? This plasminogen is not converting plasmin. अगर कन्वर्ट हो भी रहा है तो बहुत स्लो रेट हो रहा है। तो इसका चीज़ किसको इफेक्ट करेगा, ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट जो होगा वो बहुत धीरे धीरे स्टॉप होगा, नहीं तो ब्लड क्लॉट वहाँ पे बनता ही रहेगा। अगर ये चीज़ प्लाज्मिन का लेवल जो है वो लो रहेगा, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, द ब्लड क्लॉट अमाउंट जो होगा, ब्लड क्लॉट होगा वो चलता ही रहेगा, बट उसका डिग्रेडेशन जो होगा वो बहुत लो रेट पे होगा, बहुत स्लो रेट पे होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज प्लाज्मिन का लेवल जो है वो बहुत मैटर करता है इन केस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस, राइट। अगर प्लाज्मिन का लेवल जो है वो ठीक है, सही रेट पे चल रहा है, एग्जैक्ट रेट है, पेस उसका सही चल रहा है, दैट मीन्स जो क्लॉट डिग्रेडेशन है वो सही रेट पे होगा। लेकिन अगर प्लाज्मिन जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर उसको बहुत स्लोली इनएक्टिव फॉर्म को जो होता है एक्टिव फॉर्म में कर रहा है, प्लाज्मिन का रेट बहुत कम है, देन दैट मीन्स द क्लॉट रिमूवल बहुत स्लो लेवल पर, ठीक है। बिफोर क्लॉट इज रिमूव वॉल इज रीसिंथेसाइज्ड, मतलब हमें ये भी हमारा बॉडी मेक्स श्योर दैट clot when has to be removed only when the wall is resynthesized properly. जैसे ही वॉल अपनी resynthesized properly हो जाएगी उसके बाद ही हमारा क्लॉट रिमूव होगा, राइट। सो नाउ क्लॉट स्टॉप्स इट्स एक्टिविटी इटसेल्फ, क्लॉट अपने आप ही अपनी पूरी एक्टिविटी को रोक देगा, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग इन फाइब्रिनोलाइसिस और क्लॉट रिमूवल, और यू कैन आल्सो से इट एज डिसोल्यूशन ऑफ द clot. So this is happening in this video, guys, and I hope this is very clear. This is very simple, and any problem regarding this you can put down in the comments below. Any issues you can just put down and we'll get back to it, right? So blood clot, this flow chart is the main thing here, which is letting you know what is happening with blood clot surrounding epithelial cells को activate करता है, फिर tissue plasminogen activator होता है, वो activate करता है किसको, plasminogen को convert होता है plasmin में। So this is the flow chart which is for you, and here platelet factor 3 and platelet derived growth factor, ये दोनों important है, these are both taking place. So this is all for today, right? Fibrinolysis, very simple, and hope you guys like this video, and do subscribe to my channel, right? And this is very simple, clot removal, fibrinolysis बहुत easy है, बहुत simple है, कोई इसमें टफ साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। मैं ये बोलूँगी आपको, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज दैट आई हैव ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस क्लॉट फॉर्मेशन, प्लेटलेट ब्लड फॉर्मेशन, क्लॉट मैकेनिज्म, ये सब आप देखिए, उसके बाद इसमें टिल देन टेक केयर।